तो ये बात होगी। और हम वाकई अपने मामलात में फंसे हुए हैं। हम तो बहुत ज़्यादा हम डालने की भी हमारे पास तो फुर्सत नहीं है। हम वाकई बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं और इन चीज़ों से जब निकलेंगे तब हमारे तो लोगों को इस चीज़ का नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ग्रेविटास प्लस। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ग्रेविटास। ओके गाइस, क्या ग्रेविटास है? ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ग्रेविटास प्लस, अ न्यू डाउन फॉर इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री। On the 20th of November 1967, India launched the Rohini 75. Its first indigenous rocket, which also marked the beginning of the Indian space program. More than half a century later, and several launches later, India's private space sector is set to achieve a similar feat. Space tech startup Skyroot Aerospace is set to lift off the country's first privately developed rocket into space. It's called Vikram S. The launch will be historic, simply because space exploration in India has so far been the domain of the public sector, with the Indian Space Research Organization leading the development, design and launch of the space missions. Vikram S will break that wheel. Its launch will be a reflection of the boom in India's private space sector. And for all you know, it could further lead to India's own SpaceX-type ventures. How exactly? Let's find out. Hello and welcome to Gravitas Plus. I am Molly Gambhir. The Indian space industry is in transit. From being government-run for decades, it is now opening up to private players. The process has been underway for over 2 years. In 2020, the government introduced a slew of reforms to boost private participation in the sector. Chief among the reforms was the establishment of InSpace, the Indian National Space Promotion and Authorization Center. What exactly is this body? It is a single-window autonomous agency that acts as a link between the Indian Space Research Organization and private companies in the space sector. The aim of this body is to harness the huge untapped potential that exists in India vis-a-vis space research and exploration. And with this in mind, India opened up the space sector to private companies. InSpace is responsible for boosting their participation. The launch of Vikram S is a direct result of this initiative. The rocket is developed by Hyderabad-based Skyroot Aerospace. It is named after Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program. But what exactly is it? Well, Vikram S is essentially a small lift launch vehicle. It is part of a mission called Prarambh, or beginning. This mission will carry 3 payloads to space. It will be a suborbital flight, like the ones undertaken by Jeff Bezos and Richard Branson. The flight will validate the technologies part of this mission. Is this mission one of its kind? Not really. There is another. It is called the Agni-Let, a 3D printed rocket engine developed by space tech startup Agnikul Cosmos. Last week, it was successfully test-fired at the Vikram Sarabhai Space Center. It was a major milestone for India's space ambitions. Agni-Let is the world's first 3D printed rocket engine. It has been designed and manufactured entirely in India. The test launch has only validated India's capabilities. It has also set the stage for similar future missions by private players. You see, these 2 missions are not the only ones. There are a host of other space tech startups that are looking to launch their own missions and propel the growth of India's space tech ecosystem. To start with, we have Bellatrix Aerospace. It recently announced it will be investing $76 million to set up a manufacturing wing in Bengaluru. And then we have Digantra, which translates to space in Sanskrit. It is India's first private space company that is ready to send 40 satellites to clean up space junk. Digantra has also launched what is arguably the world's first commercial space-based weather system.
Its technology is kind of like Google Maps for space. Next, we have Dhruva Space, another private space tech startup which is developing small satellites in the commercial, governmental, and academic markets. And the list does not end there. Besides these major ones, there are other startups as well that are looking to fire up India's space ambitions, like SatSure, Pixel, Astrogate Labs, E-Plane, Galaxy Eye. Given the pace at which India's private space sector is expanding, experts say launching a satellite to space in India could soon become as easy as booking a cab online. I'm not kidding here. Analysts predict India's space tech industry to grow at a rate of 6% each year. And this will be across all domains: satellite manufacturing, ground segments, launch services, R&D. Which brings me to another question. How much is the sector currently worth? Around $9.6 billion. According to a survey, if we keep going at the current pace, then by 2025, this value could touch $12.8 billion. Next question. How exactly will this benefit India? Well, it could help India emerge as the go-to destination in the global space market. And the argument is not far-fetched. Just have a look at how the market is currently faring. After the United States, China and Russia were the biggest space giants until now. Both are now seen as unreliable collaborators in a way. China because of its notorious activities that are amplifying the space junk menace, and Russia because of its actions in Ukraine. They are impeding global trust in Moscow. And this puts India in a unique position. It has the right capabilities, the ability to do business, and the right mix of talent and infrastructure. If India wants, it can emerge as the next big space market. But that will not be an easy feat. Today, the global space economy is worth $469 billion. And do you know how much India's share is in this? Just 2%. And that's according to India's own estimates. And look at how much India spends on space programs. According to Statista, the United States allotted $54 billion for its space budget. China was on the second spot with $10 billion. France came third with $3.95 billion, followed by Russia at $3.57 billion, Japan at $4.21 billion, Germany at $2.38 billion, and India was on the seventh spot with just $1.96 billion spent on space programs. What does this tell you? New Delhi still has a long ladder to climb when it comes to global competitiveness. The privatization of the space market is by far the biggest step in this direction. This privatization drive in the space sector will add new dynamism to India's ambitions. It will help India leapfrog to the next stage of space exploration. The foundation has been laid. The first big steps have been taken. The way forward will be defined by the kind of risks that India is willing to take. जी जनाब, मुझे तो अब तक पूरी वीडियो देखने के बाद भी अपने कानों पे, अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ मैंने देख लिया है। और ये मतलब ये ऐसा लग रहा था पॉसिबल कैसे है? आज से 20-25 साल बाद अगर ये बात होती तो चलो 3000 तक तो फिर मैं मान लेती। अच्छा, एक और चीज 30 ऑनलाइन 2030-35 नहीं, 30 तो चले 5 साल की बात की बात होगी, 7 साल की बात होगी। मैं इतना आगे भी नहीं तसव्वुर कर रही हूँ इस चीज़ का। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये कहूँगी, ऑनलाइन कैब सिंगल विंडो, बड़ी बात। मतलब उन्होंने खुद भी कह दिया नॉट किडिंग एट ऑल, यानी कि आप ये ना समझिए मैं मजाक कर रही हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मतलब पॉसिबल होना शुरू हो गई हैं, मतलब ये अब ये होने वाला है क्या? ये चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही हैं, इस पे इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है?
मतलब आप तसव्वुर करें कि कहाँ दुनिया पहुंच गई है। स्पेस जंक को साफ करने की बातें हो रही हैं। कमाल हो गया, मैं कह रहा हूँ कमाल। सैटेलाइट्स लॉन्च करी जा रही हैं, बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं, बहुत आगे का सोचा जा रहा है। कह रहे हैं बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को लेकर एक तो यकजा हो गई हैं, इकट्ठे हो गई हैं, और बहुत सारी कंपनीज जाने का भी कह रही हैं। मैंने एक वीडियो सुनी तो थी बहुत पहले कि ऐसा होगा कि बाकायदा टूर कराया जाएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है बाकायदा अभी से ही बहुत सारे लोगों ने बुकिंग करा ली है, भले 10 साल 15 साल 20 साल बाद की बुकिंग है वो। बाकायदा वहाँ पे ऐसा भी है कि लोगों ने अभी से बुकिंग कराना शुरू कर दी है, ऐसी भी कोई वेबसाइट्स हैं। स्पेस इंडस्ट्री मतलब मुझे रिलेट भी नहीं हो रहा मुझसे, मुझे बड़ी हैरत की बात है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग, अच्छा इंडिया का मामला तो ये चल रहा है कि इंडिया ने हर उस चीज़ में हाथ डालना है जो फ्यूचर में है। 7 मुल्कों में इंडिया का नाम आ चुका है। ठीक है, हर उस चीज़ में जो देश जो कंट्री फ्यूचर पे नज़र रख रहा है वही कामयाब है। अच्छा, जो अभी अपने हालात से जूझ रहा है, जो अभी, अच्छा इंडिया में मसाइल कम है ऐसा नहीं है, मसाइल हैं, सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इसको इस तरह समझ लो कि अभी आपको आटा, दाल, चीनी, चावल, खाना पीना, मकान, इस चक्कर में हो। फ़र्ज़ करते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, आप इस प्रॉब्लम के साथ तो जूझ रहे हो, लेकिन ये घर आपके पास, फ़र्ज़ करते हैं कि यार ये जो चीज़ें आपके पास आज आ रही हैं ये 50 साल बाद फ़र्क पड़ जाएगा इन चीज़ों में, तो आपने आगे वाले हिसाब किताब को भी देखना शुरू कर दिया। ये एक कमाल की बात है। मुझे पता क्या लगता है, रोटी कपड़ा मकान वाला जो एक नारा लगाया जाता था, और एक इंडिया के हवाले से हम सुनते थे कि बड़ी गुर्बत है, बड़ा मसाइल है, बड़ी चीज़ें हैं। पानी के हवाले से हम बहुत सुनते थे, इंडिया में पानी की बड़ी वो है, हर घर वो हर जल हाँ, ऐसी कुछ स्कीम्स वगैरह के हवाले से भी, पॉलिसीज़ के हवाले से भी वो अपनी जगह सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मुझे, मैं बात क्या करने वाली हूँ वो सुने आप। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें 100% नाकामी होती, ये मसला 90% तक खाली होता ये मैदान, और इसमें काम करने को होता, तो मुझे लगता है बिजली पानी गैस को छोड़कर या मकान को छोड़कर या कपड़ों को छोड़कर इंडिया स्पेस में हाथ नहीं डालता। लेकिन ये इन मामले में थोड़ी नहीं, अच्छी खासी, मैं कहूँगी 60% तक स्टेबिलिटी आ चुकी है। यानी 60% आवाम जो है उनको ये चीज़ें मिल चुकी हैं, 60 to 70%, 20 to 30% तो होगा, इतना तो मुझे भी आइडिया है। लेकिन ज़्यादा बड़ा तबका सेटिस्फाइड हो चुका है, उनकी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, उनको स्टेबल कर दिया है इंडिया में अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी स्कीम्स के थ्रू, अपने दौरे हुकूमत पे। अब मोदी जी जो है वो स्पेस के हवाले से भी सोच रहे हैं, 2% ही सही, लेकिन उनका हिस्सा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है बीच में। प्राइवेट सेक्टर ही वो होता है जो कि मतलब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करता है, और एक अलग ही लोगों के लिए होगा, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके लिए फैसिलिटीज़ होंगी। कुछ कंपनीज का नाम बताया, ध्रुव हो गया, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में लोग वहाँ से टूर करके आएंगे। अभी जो लोग बताते थे, मैं फ़लाने कंट्री गया, तो फ़लाने कहेंगे मैं फ़लाने प्लैनेट गया, मैं जुपिटर गया, मैं स्पेस गया, मैं यहाँ गया, मैंने चांद का सफ़र किया। ऐसे ही होगा ये तो। और मैंने थोड़े दिनों पहले तक तो बाकायदा सुना था न्यूज़ में पता न्यूज़पेपर में सुना था, या मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी थी फेसबुक वगैरह के ऊपर कि बाकायदा मूवी बन रही है चांद पे। बिल्कुल, चांद के ऊपर जाकर हाँ मूवी बन रही है, वहाँ पे डिजिटाइजेशन हो रही है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो देखिए ना कि वहाँ पे तो है ना, अब तो वहाँ पे मौके मिल रहे हैं आपको, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो कुछ ना कुछ। अब जैसे हम स्पेस इंडस्ट्री सुनकर मुझे बड़ी हैरत हो रही है, अभी तक ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि इतना जल्दी चले। ठीक है, मैं सोच रही थी फ्यूचर में होगा 20-25 साल बाद ये सुनने को मिलेगा कि वहाँ पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया मेरे हिसाब से। ये शायद हम बहुत लेट लतीफ़ हैं, या तो ये बात होगी, और हम वाकई अपने मामलात में फंसे हुए हैं। हम तो बहुत ज़्यादा नज़र डालने की भी हमारे पास तो फुर्सत नहीं है। हम वाकई बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, और इन चीज़ों से जब निकलेंगे तब हमारे तो लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आगे दुनिया में होने क्या वाला है। दुनिया सारे देश हैं, 200 देश हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी 7 देश हैं जो इस मामले में काम कर रहे हैं। बड़ी बात। उसमें भी $1.96 बिलियन का बजट इंडिया की तरफ से है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इंडिया किसी भी देश से इस वक्त समझो किसी भी मैदान में, किसी भी देश से किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहना चाहता। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मतलब जल्दी